Assalam-o-Alaikum. A warm welcome to all of you at our channel Easy and Amazing. Students, we are continuously using different sort of websites in our daily life. हम अलग-अलग तरह की websites use कर रहे होते हैं daily routine में. Like we are using Facebook, we are using Google. Most probably we all are using getting कुछ भी search करना हो. What you do? You simply use the Google. But have you ever thought how this website is designed? कभी सोचा है आपने कि किस तरह से ये वेबसाइट को डिजाइन किया गया? This is done by the coding. How this is done? This is done by the coding. Now what is coding? Students, basically coding is like you are writing instructions for the computer. Getting आप कुछ instructions अपने कंप्यूटर को देते हो, किस फॉर्म में देते हो? रिटन फॉर्म में देते हो, ठीक है? अब ये इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देने के लिए आपको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जरूरत होती है. These programming languages are HTML, CSS, JavaScript, Python, C++ and many more. बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनकी हमें जरूरत होती है कोडिंग करते हुए. ठीक है बेटा? अच्छा, इसकी एग्जाम्पल आप बिल्कुल ऐसे ले सकते हैं कि अगर आप कोई छोटा सा सेंटेंस लिखें उर्दू में या इंग्लिश में. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर राइटिंग अ सेंटेंस, वी आर लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ठीक है, छोटा सा एक सेंटेंस लिखा हमने, वी आर लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. नाउ व्हाट यू नीड, इस छोटे से सेंटेंस को लिखने के लिए भी आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ी? यू नीड अ नाउन, यू नीड अ प्रोनाउन, यू नीड अ वर्ब, यू नीड हेल्पिंग वर्ब. सी, आपको डिफरेंट तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत पड़ी एक छोटे से सेंटेंस को लिखने के लिए. ऐसा ही है. इन द सेम वे, व्हेन यू आर राइटिंग, जब आप लिख रहे हो, आप कोडिंग कर रहे हो, व्हेन यू आर गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर, you need different programming languages. Getting students? So the most common and the most important that you need for web development are HTML, CSS and JavaScript. Now what is HTML, what is CSS and what is JavaScript? Let's have a quick review. Students, HTML is basically the structure of your website. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो तो ऑब्वियसली उसे आपने पहले स्ट्रक्चर करना है. इसकी एग्जाम्पल आप इस तरह से ले सकते हैं स्ट्रक्चर करने के लिए कि जब हम अपना कोई घर बना रहे होते हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम पहले उसका एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं. ऐसा ही है, आप उसमें रूम्स बनाएंगे, आप उसमें किचन बनाएंगे, आप उसमें ड्राइंग रूम बनाएंगे. सो यू आर मेकिंग द स्ट्रक्चर. आप अपने घर का स्ट्रक्चर बना रहे होते हो. ठीक है. देन वॉट यू डू, जब एक बार स्ट्रक्चर बन गया, देन यू गो फॉर द स्टाइलिंग. फिर आप स्टाइलिंग स्टार्ट करते हैं. अब आप स्टाइलिंग कैसे करते हैं अपने घर की? यू गिव डिफरेंट कलर्स टू योर वॉल्स. आप अपने रूम्स में अलग अलग तरह के कलर्स करवाते हैं. यू कीप द फर्नीचर ओवर देयर. ठीक है, आप उसमें फर्नीचर लगवाते हैं. ठीक है. यू कीप डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डेकोरेटिंग आइटम्स इन योर होम. आप अलग अलग तरह के डेकोरेटिंग आइटम्स रख रहे होते हैं अपने घर में. ठीक है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज स्टाइलिंग. And how you do the styling? Styling is done by CSS. For a structure, you need HTML. For a structure, what you need? You need HTML. For styling of the website, you need the CSS. Getting students? जब आपने वेबसाइट की स्टाइलिंग करनी है तो उसके लिए आपको क्या कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है? यू नीड CSS. Now, अब हमारा घर बन गया, हमने उसमें फर्नीचर रख दिया, हमने उसकी डिजाइनिंग कर दी अलग तरह से. ठीक है, जैसे हम चाह रहे थे हमने उसे डिजाइन कर दिया. नाउ आपने अपने घर में डिफरेंट स्विच बोर्ड्स लगाए, उसमें बटन्स लगाए. अब लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शनैलिटी. अब जो आपने बटन्स वहां लगाए हैं, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कौन सा बटन क्या काम करेगा. ठीक है, कौन सा बटन फैन ऑन कर रहा है, कौन सा बटन लाइट ऑन कर रहा है. सो यू गिव दीज आर दी फंक्शनैलिटीज. अब जब हम फंक्शनैलिटी की बात करें वेबसाइट पे, फॉर दैट यू नीड जावास्क्रिप्ट. व्हाट यू नीड? यू नीड अ
language which we call as JavaScript for logic and functionality of your website. Getting students, for the structure, for making a structure or layout of your website, you need HTML. For the styling of your website, you need CSS. And for the functionality of your website, you need JavaScript. Getting? Now, अब हमने बात कर ली कि भाई हमें कोडिंग के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत है, ठीक है? लेकिन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम कहाँ लिखें? Where do we need to write? So we need code editors for it. हमें अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे क्या चाहिए? कोड एडिटर्स चाहिए. There are so many code editors, few I am writing here. You can even use Notepad for writing your code. आप Notepad भी use कर सकते हैं, ठीक है? You can use Visual Studio. एक सॉफ्टवेयर है आपके पास Visual Studio, which is one of the best software for writing the coding. ठीक है, आपको कोडिंग के लिए एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वो है Visual Studio. You can also use Bracket. तो जो आपको इजी लगे you can use it, but I prefer Visual Studio. You can also go for the Bracket. ठीक है? Now let's talk about the HTML. Today we are going to start discussion about the HTML. The first question which should arise in everyone's mind is, what is HTML? So students, HTML stands for Hypertext Markup Language. ठीक है? HTML किस चीज का एब्रीविएशन है? Hypertext Markup Language. As we have previously talked that what does HTML do? It is used to structure a web page. जो आप वेबसाइट डेवलप कर रहे होते हो उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप क्या यूज करते हो? आप HTML यूज करते हो. मीन्स के कौन सा बटन कहाँ होना चाहिए, ठीक है, कौन सी हेडिंग कहाँ लिखी होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ों के लिए, इस तरह के लेआउट के लिए, जब हम लेआउट बना रहे होते हैं तो उसके लिए हमें HTML रिक्वायर्ड होती है, ठीक है. The components used to design the structure of websites are called HTML tag. अब इस स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए आपको जो कंपोनेंट्स चाहिए उन्हें आप क्या कहते हैं? HTML टैग्स. इसकी एग्जांपल आप अगेन अपनी बिल्डिंग से ले सकते हो, ठीक है. हमने कहा कि भाई जिस तरह से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, ठीक है, इसी तरह से HTML क्या करता है? HTML वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाता है. अब जब आपको बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाना होता है तो आपको क्या क्या चाहिए होता है? यू नीड द ब्रिक्स, यू नीड सीमेंट, है ना, यही चीजें चाहिए होती हैं. बिल्कुल ऐसे ही जब आप अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो तो व्हाट यू नीड टैग्स. आपको HTML के टैग्स चाहिए होते हैं, ठीक है. फॉर द क्रिएशन ऑफ योर स्ट्रक्चर यू नीड HTML टैग्स. ओके स्टूडेंट्स, सॉरी. Now let's see the example. See, you can see के brackets में, I hope you can see the cursor. Cursor नजर आ रहा है? What is this? This is the tag. ये जो first है, this is called as opening tag. इसे हम क्या कहते हैं? This is the opening tag. And the last one, जिसमें आपके पास backslash आ रहा है, this is the closing tag. ठीक है? HTML में जब हम कुछ लिख रहे होते हैं या हम कोई भी स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज द टैग्स एंड ऑल द मोस्टली टैग्स हैव द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स. ठीक है, मोस्टली जो आप टैग्स यूज कर रहे होते हो उसके क्लोजिंग टैग्स भी होते हैं. एंड द कंटेंट दैट यू राइट, जो भी आप लिख रहे होते हैं टैग्स के दरमियान, दिस इज कॉल्ड एज कंटेंट. गेटिंग? Collectively this complete tags and content, this collectively is called as element of HTML. ठीक है, these are tags, this is content, whatever you are writing between the tags is the content, and collectively tag and content is called as element.
Getting, students? I hope there isn't any confusion till now. Now, here's the basic HTML page. Okay, this is how we write the structure. This HTML is basically, आपने HTML टैग लिखा, ये उसका क्लोजिंग टैग भी लिख दिया आपने साथ ही. This is the root of an HTML tag. ठीक है, ये जो HTML टैग हम यूज कर रहे हैं, this is compulsory. Why? We have said that this is the root of an HTML document. Then you use the tag of head. Head is just like a container for metadata. ठीक है, ये आपका एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें आप metadata स्टोर करते हैं. अब कंटेनर की एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो, हम किचन में जाते हैं, हमारे पास डिफरेंट तरह के किचन में जो है आइटम्स रखे हुए होते हैं. फॉर एग्जांपल अलग अलग तरह के स्पाइसेस रखे हुए होते हैं, तो वो किस में रखे होते हैं? हर स्पाइस एक अलग कंटेनर में रखा होता है. बिल्कुल ऐसे ही हेड भी आपका एक कंटेनर है, और इसमें आप क्या स्टोर करते हो? इसमें आप स्टोर करते हो मेटा डेटा. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट डू वी मीन बाय मेटा डेटा. ये मेटा डेटा क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, metadata gives you information about other data. या आपको information provide करता है कि जो आपका बाकी का डेटा होने वाला है वो किस चीज के बारे में होने वाला. ठीक है, it gives you information about other data of the website or of the structure. ठीक है, then under the head, under the tag of head, you gives another tag that is title. टाइटल इज पेज टाइटल. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप गूगल पेज ओपन करते हो तो आपके पास टॉप पे गूगल लिखा हुआ आ रहा होता है, दैट इज द पेज टाइटल. ठीक है, देन बॉडी. बॉडी टैग कंटेन्स ऑल द डेटा. अब आपके स्ट्रक्चर का, आपकी वेबसाइट का जितना भी डेटा होगा वो किस टैग में आएगा? इट विल कम अंडर द कंटेनर और अंडर द टैग ऑफ बॉडी. Getting? So this is the basic HTML page. Let's see how it's work. I am going to open a code editor. So right now I am having bracket software as a code editor. So first what we need to do, we need to save this page. See, जहां आप इसे सेव करना चाह रहे हैं, मैं इसे अभी डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ. I am giving the folder name HTML, and the first page which right now I am making is index.html. ठीक है, अच्छा यहाँ एक चीज समझने की ये है कि जब भी आप HTML डॉक्यूमेंट बना रहे हो, अपनी कोडिंग लिख रहे हो HTML की, यू हैव टू सेव इट विद द एक्सटेंशन ऑफ HTML. आपने HTML ही यूज करना है, जो भी आप नेम दें उसके बाद एंड में आपने यूज करना है .html. ठीक है, नाउ सेव इट. ओके, सी इट इज नाउ ऑन द टॉप. द पेज नेम इज कमिंग index.html. ये आपका पूरा पाथ आ गया. ठीक है, now let's start writing the code. We are just making a basic HTML page right now. So what we see, first you are going to write the tag of HTML. अच्छा, इसकी अच्छी बात ये है कि आपने ओपनिंग टैग दिया, आपके पास ऑटोमेटिकली ही क्लोजिंग टैग आ गया. ठीक है, now under the tag of HTML you will give the tag of head. Then we are giving it title. अच्छा, हमने कहा था कि टाइटल पे आप क्या देते हो? इन टाइटल यू राइट योर पेज नेम. आप जो भी वेबसाइट बना रहे हो आप उसका जो पेज नेम देना चाहते हो आप वो लिखते हो यहाँ पे. ठीक है, आई एम राइटिंग हियर माय फर्स्ट HTML page. See, this title is given to the page. Now
After the closing tag of head, we are going to use another tag in which our whole data will be stored, and this tag is body tag. अब इस बॉडी टैग में हम जो भी अपना स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं हम वो तमाम टैग्स यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे वेबसाइट पेज पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ, ठीक है, सो फॉर पैराग्राफ वी यूज द टैग ऑफ पी. ठीक है, पैराग्राफ का टैग इस तरह से होता है. Now here you can write whatever you want to write. I am just writing hello world. Okay. I am making my first HTML page. See, you can write whatever you want. ठीक है, जब आपको कोई पैराग्राफ लिखना हो तब आप पैराग्राफ टैग यूज करेंगे. ठीक है. Now let's save it and see how it works. You can have the live preview. And here you go. ठीक है, ये देखिए टाइटल आपके पास यहाँ टॉप पे आ गया जो आपने टाइटल में लिखा था. हेड में अंडर द टैग ऑफ टाइटल यू रॉट इट माय फर्स्ट एचटीएमएल पेज, वो यहाँ नेम आ गया. ठीक है, फिर हमने पैराग्राफ टैग को यूज किया और यहाँ लिखा हेलो वर्ल्ड आई एम मेकिंग माय फर्स्ट एचटीएमएल पेज, इट अपीयर्स हियर. ओके, नाउ इज देयर एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? Sure. Okay, it was just a short introduction about the HTML. Okay, inshallah in the next video we are going to learn about other tags of HTML. Till then what you have to do, download any code editor. कोई एक code editor download कर लें. I will prefer download the Visual Studio. ठीक है, or the Bracket. You can also download Bracket. Okay, download it and whatever we have done, अभी जो हमने basic page create किया है इस basic page को आप create कर लें. ठीक है. So see you in the next video. Till then take very good care of yourself and Allah Hafiz.